Moving on, question number 5. A rabbit runs across the road in front of the car. The driver applies the brakes. State 4 factors that affect the chance of the rabbit escaping without being hit. Now, if you open up my slides, वहाँ पे आपको मैंने कुछ factors दिखाए थे. Some of them are physical factors भी हैं, कुछ system factors भी हैं, कुछ car के errors हैं. कैसे क्या क्या factors हो सकते हैं? Well, that depends on the condition of the driver as well, condition of the car as well. जैसे कि पहले अगर हम condition of car की बात करें, condition of now what can affect the stopping distance? Obviously, condition of car and the brakes may affect the stopping distance. Okay. Another factor, it can be the condition of road surface. Condition of road surface. जैसे कि more stopping distance if the road is wet or icy. अगर वो road wet या icy है, again stopping distance will be. Other than this, we can talk about the driver. The driver might be on drugs or he or she may be drunk and loses and not in their senses. And if the driver is not in their senses, obviously the stopping distance can be affected. Fourth factor, visibility factor. Visibility factor. Why? Due to fog. Fog हो सकती है तो आपके पास visibility factor भी है. इसके अलावा the speed of the car. The speed of the car might be very fast. The speed of the car would be great. ये आपके पास कुछ factors हैं that can affect the chance of the escaping of rabbit without being hit. Question number 6. The diagram shows some people waiting in a queue at a supermarket. We have person X over here. ठीक है और वो सारे एक लाइन में खड़े. The queue moves forward each time a person leaves the checkout. Person X spends 7 minutes in the queue before reaching the checkout. The graph explains how the distance changes with the time for person X. तो उसको तकरीबन टोटल 7 मिनट्स लगे हैं. उसको टोटल 7 मिनट्स लगे थे. 1 2 3 4 5 6 7 minutes took for the person X to move forward in the line. ठीक है वो आगे जाती होती फिर stop, moving stopping, moving stopping. जैसे एक एक बंदा काउंटर पे आगे जाता है. When you go to a cash and carry, you have to wait in the line. So this is a distance. Now this is a distance time graph. अब distance time graph में you only have to focus on one thing. No area under the graph. यहाँ पे area under the graph को नहीं देखना. What you have to look at is the gradient. जब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं उधर एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है डिस्टेंस और ग्रेडियंट क्या होता है एक्सेलरेशन. इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एंड द स्पीड. आपका जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी डिस्क्राइब करता है. जैसे कि ओवर हियर द स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन वुडंट मीन दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओवर हियर द स्ट्रेट लाइन वुड मीन दैट द वेलोसिटी इज जीरो क्योंकि आपका डिस्टेंस ही नहीं आगे मूव हो रहा. So what is the initial length of the queue? अगर हमने initial length निकालनी है queue की तो वो कितनी है? It's around 6.1. Total length of the queue was 6.1 meter. फिर वो जाके change हुई. Explain how you could use the graph to work out the number of times person X is stationary. कितनी दफा हम count कर सकते हैं that the person was actually stationary? We can count the number of horizontal lines. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So total of 6 times. यहाँ पे भी था, sorry, ये भी है 7. Total of 7 times we have to count all the straight line जो कि आपको show कर रही है that the velocity is 0 or it means rest or it means stationary. Stationary, rest and zero velocity is the same thing. तो हम यहाँ पे लिखेंगे on the graph count the number of क्या होगी number of horizontal lines. Count the number of horizontal lines that will show zero velocity and that the person is stationary or in a rest position.
स्टेट द इक्वेशन लिंकिंग एवरेज स्पीड डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन। तो वो क्या इक्वेशन है आपके पास? वी हैव टू राइट इट इन फुल फॉर्म, रिमेंबर। वो है आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। whenever this kind of question comes, जिसके अंदर लिखा हो एग्जामिनर ने स्टेट द इक्वेशन, रिमेंबर यू आर न्यू टू पास पेपर्स, स्टेट द इक्वेशन का मतलब होता है यू हैव टू राइट इन फुल वर्ड्स, डोंट राइट दिस s is equal to d by 2। ये लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू वोंट स्कोर एनी मार्क्स, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन to calculate the average speed of the person x in the queue। अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है पर्सन x की, टोटल डिस्टेंस क्या था आपके पास 6.1 मीटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या लगा था उसको, 7 मिनट्स लगा था ना उसको। तो आपके पास और 7 मिनट्स है, हमें किस में चाहिए होती है स्पीड, मीटर्स में, 6.1 इज इन मीटर, और टाइम क्या होता है मीटर पर सेकेंड। टाइम तो आपको मिनट्स में है, तो मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनटू 60। तो 6.1 इज द डिस्टेंस, डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा 7 इंटू 60, 7 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ताकि आपका जो टाइम वो सेकंड्स में आ जाए। एंड द आंसर वुड 0.015 meter per second is the person's speed। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। गॉट इट?